Second question, which of the following is not actinoid? एक्टिनोइड कौन सा इसमें नहीं है? फर्स्ट, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम. So here the option number 4, that is the terbium, is not actinoid. अब ये ऐसे क्यों है? क्योंकि टर्बियम का जो एटॉमिक मास दिया है वो क्या है, 65. और बाकी के जो एटॉमिक मासेस है वो देखो 90 के ऊपर है, 92, 98, 96 लाइक दिस. तो जिनके एटॉमिक मासेस 90 के ऊपर होते हैं वो एक्टिनोइड्स होते हैं. ओके, और जिनके एटॉमिक मासेस 90 के बिलो होते हैं, जैसे ये 70, ओके 74 तक जिनके होते हैं, 74 तक जिनके होते हैं, 74 तक, तो आई थिंक 74, दैट इज 60 टू 74, 60 टू 74 होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे लैंथेनॉइड्स. ओके, तो टर्बियम जो है वो लैंथेनॉइड्स में आ जाता है. सो टर्बियम, द फोर्थ ऑप्शन is the correct one. Then the third question, the order of a screening effect of the electron of s, p, d and f orbitals of given shell of an atom on its outer shell electron is. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें ज़्यादा होगा ये आपको बताना है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, एस का ज़्यादा होगा, देन पी का, देन डी का. इन दिस वे एफ इज हैविंग द स्मॉलेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो यहाँ पे एस का जो है वो हमेशा ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट इसलिए होगा, तो हम फिर से देखते हैं कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम will be less than the actual charge on the nucleus because of the shielding or screening effect. तो screening effect का मतलब ही shielding effect होता है of the valence electron from the nucleus by intervening the core electrons. For example, 2s electron in the lithium is shielded from the nucleus by the inner core of the 1s electron. So therefore s orbital is having maximum shielding effect or screening effect. D and F orbital is having less shielding effect, or we can say they are having the de-shielding effect. F orbital is having the de-shielding effect. Then see the question number 4. The first ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminum, silicon are in the order of. So here option A, option number 1, Na is less than magnesium, magnesium is more than aluminum, and aluminum is less than silicon. So why this? This is the correct option, that is the first option is correct. So here first option we give as a correct mark. Why it is correct? Because across the period increasing nuclear charge outweighed the shielding.
तो जैसे हम सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से सिलिकॉन में जाते हैं, तो वैसे वैसे उनका क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सो द न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग। तो शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो भी इसमें आ जाता है। द आउटर इलेक्ट्रॉन आर held more and more tightly in the ionization enthalpy increases across the period. Ionization enthalpy means energy required to lose the outermost electron. ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम पीरियड के राइट हैंड साइड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाते हैं, वैसे वैसे उनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सोडियम से मैग्नीशियम तक हम जाते समय वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जब जाते हैं तब वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि in case of magnesium, outermost electron in the s orbital, that is stable noble gas configuration, and penetration effect of the s subshell is more compared to aluminum, in which outermost electron is in p subshell. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या हो जाता है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में है, एंड मैग्नीशियम में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है। तो ये एस ऑर्बिटल में जैसे आपने देखा है कि उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम है, एंड एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण कम हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह का आपको दिखाई देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज। तो गैडोलिनियम 64 है तो उसका हाफ फील्ड होता है, गैडोलिनियम इज हाफ फील्ड सबशेल। तो हाफ फील्ड यहाँ पे है 4f7 5d16s2। So point number 3 is the correct explanation. Gadolinium is a lanthanoid. It is a F block element and the outer electronic configuration is 4f7 5d1 and 6s2. Then question number 6, the statement that is not correct in the periodic classification of element is properties of elements are periodic function of their atomic numbers, and non-metallic elements are less in number than the metallic elements. Then third, for transition elements, the 3d orbitals are filled with the electron after 3p orbitals,
and before 4s orbital. So this option is the wrong option. So therefore the point number 3 is not correct option. Because of what? Because here what happens before the 3D filling of the electrons in the 3D orbital, 4s orbital is filled. Okay, not 3p orbital. So 4s orbital is filled first, then 3D orbital is filled. Okay, then the question number 7. Among the halogens, the correct order of the amount of energy released in electron gain enthalpy. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप देखेंगे कि क्लोरीन ज़्यादा है. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन से कम है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3. तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन. अब ये ऐसे क्यों है? तो आप देखेंगे विद इन द group the electron gain enthalpy becomes less negative down the group. However, adding an electron to the 2p orbital, this is very important, adding an electron to the 2p orbital leads to greater repulsion than the adding an electron to the larger 3p orbital. Hence the element with the most negative electron gain enthalpy is chlorine. नेगेटिव क्लोरीन है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8. द period number in the long form of the periodic table is equal to long form of the period number. तो पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द period. पॉइंट नंबर 3, atomic number of any element in of the period. Point number 3, maximum principal quantum number of any element of the period. So here option number 3 will be correct because the period indicates the value of n. Principal quantum number period represent करता है principal quantum number n for the outermost or valence shell. So maximum principal quantum number of any element of the period. Then question number 9, the element in which electrons are progressively filled in 4f orbital is called. 4f orbital में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको lengthenoids कहते हैं. So here option number 3 is correct. Then 10th question, which of the following is correct order of size of the given species? तो यहाँ पे iodine atom, iodide ion and iodine positive ion is given here. So as you know that positively charged cations are always smaller as compared to the atomic size, and the negatively charged anion is having always greater size than that of the atomic size.
So therefore option number 4, last option, is the correct option. Then question number 11, the formation of oxide ion O2 negative from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic steps as shown below. So oxygen plus electron is giving O negative. The enthalpy change minus 141 kilojoule per mole. O negative electron gains electron to form O2 negative, and it is having positive 780 kilojoule per mole. Thus process of formation O2 negative in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact that now there are various facts are given. Four facts are given. Oxygen is more electronegative. Second, addition of electron to oxygen results in larger size of anion, larger size of ion. Third, electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration. O2 negative ion has comparatively smaller size than oxygen atom. O negative ion. So here option number 3 is correct option. That is the electron repulsion outweighs the stability of stability gained by the achieving the noble gas configuration. So here, as you know, oxygen is having negative charge, and when the negative charged species adds the another negatively charged electron, so there is a repulsion is there, and this repulsion will lead to the greater enthalpies, standard enthalpies, and therefore and the electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration. Okay, then question number 12 see, comprehension given below is followed by some multiple choice question. Each question has one correct option. Choose the correct option. So the paragraph is given in the modern periodic table. Elements are arranged in order of increasing atomic number, which is related to the electronic configuration depending upon the type of the orbitals receiving the last electron. The elements in the periodic table have been divided into four blocks S, P, D, F. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. Each each period begins with the filling of the new energy shell. In accordance with the above principle, the 7 periods 1 to 7 have 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete. To avoid the periodic table being too long, the two series of the F block elements called lanthanoids and actinoids are placed at the bottom of the main body.
of the periodic table. So point number 1, the question number A, the element with the atomic number 57 belongs to S, P, D, F block elements. Which block elements? So here 57 belongs to the D block element. Why? Because lanthanoids characterized by the filling of the 4f orbitals are the elements following the lanthanum, that is 58 to 71. Actinoids characterized by the 4f orbital are the element following the actinum, that is from thorium 90 to lawrencium 103. Characteristic outer electronic configuration is N minus 2 F 1 to 14, N minus 1 D 0 to 1, and N as 2. Then the point number B, the last element of the P block element in the 7th period is represented by the outermost electronic configuration. Here 7s2 6p 7s2 7p6. So here the option number 3rd is the correct option, that is 4f14 5d10 6s2 6p6. The last so explanation, the sixth period n is equal to 6 contains 32 elements, and the successive electrons enter 4s 4 4s 4f 5d